Anantha ma'am, a quick request. If you could just check your WhatsApp once. There's an important message I've shared, and then we'll just begin in the next 30 seconds. Okay. Are we live? I think we are live, right? Yes, we are. So good morning, everybody. This is Janice from CyberPeace Foundation, and thank you for joining us for another very interesting session on online safety and awareness. We have a very special speaker with us today who's going to join us very shortly. So before ma'am joins us, I would quickly like to give you an idea of what our entire campaign is about. आज हम क्या बात करेंगे, थोड़ा सा आइडिया मैं आपको देना चाहूंगी. सबसे पहले तो फ्रेंड्स, साइबर पीस फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है और हम पिछले एक डेकेड में हमने काफी सारा एक्सटेंसिव वर्क किया है साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में, एंड वी होप टू कंटिन्यू वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर द नेक्स्ट फॉर द व्हाटएवर टाइम we see in the future as well. And I am a cyber lawyer and I am working as a manager communications with CyberPeace Foundation. I've actively been a part of many awareness campaigns and Delhi Police के साथ भी हमने ऐसा एक campaign undertake किया है. It's a month-long awareness campaign. We've already conducted a few sessions. We've done quite a few radio shows. And आज भी एक बहुत ही ऐसा interesting session हम आपके लिए आज लाए हैं. Today, friends, we're going to talk about social media and matrimonial frauds, which focus on making women safe online and how they can protect their identities and their data. तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी why exactly are we speaking on this topic and why we are promoting online safety for women. Now, my dear friends, India में बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं और पिछले कुछ सालों में हमने एक इंक्रीज भी देखा है. In 2018, only 34% of the Indian population was using the internet, but as of this year, 40% Indian users have the internet. Now it doesn't seem like a lot, लेकिन अगर आप पूरी इंडिया की पॉपुलेशन को देखें 40% बहुत अच्छा नंबर है. तो इंटरनेट यूसेज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन विथ दिस इंक्रीज्ड यूसेज लोग जो रिस्क फेस करते हैं ऑनलाइन स्पेसेस में ये भी बढ़ रहे हैं. पिछले कुछ महीनों में हमने अपना जो पूरा लाइफ है वो ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया है. सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, सारी मीटिंग्स ऑनलाइन हो रही हैं. गए वो दिन जब हम बैंक में लाइन में खड़े रहते हैं, घर बैठे बैठे एक बटन दबाया, पैसे यहाँ से वहां ट्रांसफर हो गए. आपको मोमोज खाने का मन है, आपने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया, घर के बाहर जोमेटो वाला खाना लेकर आ जाता है. तो हमारी जो लाइव्स है फ्रेंड्स वो बहुत इजी हो गई हैं, लेकिन ये जो इंटरनेट जो एक रिसोर्स है इसे सैडली क्रिमिनल्स भी यूज कर रहे हैं. एंड एन इवन सैडर फैक्ट इज दैट वुमेन एंड चिल्ड्रन are targeted most commonly in online spaces. In fact, अगर हम पिछले कुछ साल का जो NCRB का डेटा है अगर हम इसे भी उठाएंगे, the most number of cyber crimes sadly are committed against women. So it becomes very important to sensitize women on how they can be targeted. And matrimonial frauds are on the rise. In fact, कुछ दिन पहले ही मैंने एक न्यूज आर्टिकल रीड किया था जिसमें लिखा था there's a lady, she came across a profile on a matrimonial website, they were attracted, बात करनी शुरू करी, लेकिन जो prospective जो partner थे उन्होंने उल्लू बनाया, काफी sad सी story बताई. ये जो victim है हमारी, she felt sympathetic, लगा कि चलो मुझे मदद करनी चाहिए, and being a good human being she mortgaged her gold. इन्होंने अपने gold को mortgage किया ताकि वो इस इंसान की help कर सके और इनके 6.5 लाख रुपए चले गए.
तो मेरा पॉइंट ये नहीं है कि दूसरों की मदद करना हम बंद कर दें, बट किस तरीके से आप लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सा प्रोफाइल रियल है, कौन सा प्रोफाइल शेडी है, किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी चाहिए, एंड सम बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू कैन कीप इन माइंड। आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो इसी के बारे में रहेगा। सो वी हैव अ वेरी स्पेशल स्पीकर विद अस। मैम हैज बीन वर्किंग एक्सटेंसिवली इन दिस एरिया। मैम के पास बहुत सारी एक्सपीरियंस है, मैम के बारे में बहुत चीजें मैं आपको बता सकती हूँ, बट वेरी शॉर्टली जस्ट टू गिव यू एन आइडिया of a very wonderful and wise and knowledgeable speaker. We have Miss Anandita Mishra with us. She has a decade worth of experience in creating cyber safety awareness in her capacity as the McAfee Cyber Mom India. So ma'am has been one of the very few role models in India who has been talking about this with special focus on women and enlightening and empowering parents on how they can protect their children in online spaces. She has now started her own individual campaign which is called Mission Cyber Safety. आप सब मिशन साइबर सेफ्टी को चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट भी शेयर किया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, एंड her aim is to share tips and resources with parents and educators on bringing up aware and digital and responsible digital citizens. Her experience as a high school teacher and parent of now adult kids has helped her connect easily with children and adults alike, and she's been helping families to make a smooth transition to the digital world, which has become very much important now more than ever. So I would like to invite Anandita ma'am to share her wonderful thoughts with us and help us bring up responsible digital citizens. Ma'am, over to you. Thank you, Janice. Thank you, CyberPeace Corp, Delhi Police, for this wonderful forum and for selecting such a wonderful topic, awareness for women, social media, and matrimonial fraud. Because right from the time that the digital media has taken over our social lives, because we have all gone digital, it's such an attraction to everybody, starting from the young to the old. Here is a place where we can meet, greet, connect without any worry about border, even without moving out of our houses. And from the time lockdown started, this is where the youngsters are meeting and connecting with each other because, well, you cannot go out. There are no hotels or restaurants open. Where do you connect and hang out? You do it on social media. So there are apps on social media where you can go to find friends. Of course, there are all the old like the FB, Instagram. These are already there. But beyond that, there are dating apps like Tinder. There are matrimonial sites whose help is taken not only by the young people but by the family and friends to find a suitable match for their loved ones. So, what happens on these sites? On these sites, you get to meet people, people from different spheres of life, and you find out whether you match, whether your choices are the same, whether your hobbies, likes, passions, and dreams, match so that you can be assured that you are going to lead a compatible life together. It's a fantastic way to find a life partner, a friend. But this field has one problem. You are not meeting the person before you start talking to him. You have absolutely no idea whether the boy or girl you're speaking to is genuinely who or she or he professes to be. You have no idea whether the profile, the information shared is genuine or not. That is one of the biggest caveat of connecting online, and how cyber criminals are taking advantage of this is what we are going to talk about today, so that we do not stop going to these sites. Rather, we go to these sites in an informed manner and know what to avoid and what to look for. We don't want to be conned. We are going to do it in a smart way. So I'm going to share a short presentation with you, and I would love you to keep sharing your questions so that at the end of the show we'll have a lot of discussion on this. Promise you, I don't want to bore you. I hope you're going to love this. So we start a presentation on social media, dating, and matrimony fraud. Is my screen visible to all? Yes, ma'am, it's working perfectly fine. Thank you.
So what happens when you are online, either on the social media platform, you meet somebody, a new friend request pops in, you accept the friend request because you find the person interesting and perhaps you can gel and get in touch. We do that all the time on Twitter. I do not know half the people, or what half, I do not know 90% of the people in real life who I meet on Twitter, but we have such wonderful conversations and I really adore my time spent on Twitter. But, and there is always a but, if I had to meet this person face to face and we plan to become closer, then I would need to know more about this person. And so let us start with the basics. What happens on the marriage or dating portal? We all know what happens on social media, so we'll not go there. There you accept or reject friend requests that come your way. Even FB keeps making suggestions to you. You may know this person or may not know, and you accept or ignore. On marriage or dating portal, the system is a bit different. You have to register on the site, and once you register and provide details like name, age, sex, profession, your hobbies, details that will help you to find like-minded partners. Then you choose a plan that is suitable to you, pay the fee, and you are online. You have to share your recent photo, of course, and you may or may not share your contact and photo with all. You may ask them to be kept private. If you can do it yourself, or if it is a matrimonial match, it can be done by any family member or friend. So the basic is once you register. So the registration happens, not only do you register, but there are frauds who are also registered on these websites. Now, these websites have a huge number of people joining them every day. They may be free or paid websites. Always better to go for the paid ones. We'll come to that later on. What does a cyber criminal do? What the first thing it does, he or she, I will not be gender specific here, because we have come across cases where both men and women have taken advantage of this digital forum to con other people. So I will just call them the criminal out here. We'll call them the um, hunter. They create a false profile and upload it. They joined up such dating sites and also the matrimonial websites. They have, a target in mind. They are smart. They will not go for each and every person who has registered. They look for a particular type that they will be able to uh, target easily, with whom they'll be able to gel, who would be more vulnerable perhaps than the rest. The third is connect and establish a rapport with this. So they send across and you find a match, and if you like, you accept. And then you find that, okay, this person has quite a few things that I like about, and I may agree to chat with this person. Till now, haven't exchanged any photograph, any phone number, any details whatsoever. You're only chatting. You work on building trust. The cyber criminal is trying to build up your trust. They will not ask you for details right at the beginning. They will be trying to get into your safe space by talking about things you like, you believe in. They will work on you to understand you and get into your mind. They're usually very intelligent and they will always act decent, honest, and caring people. They will not try to put on airs, so that might detract you or put you on your guard. They'll act absolutely grounded, down to earth person, very smart, a kind of a, catch. They will continue with the modus operandi of the cyber criminal. After a few chats, they may ask to share phone numbers, and you start believing in this person, so you share your phone number. There is one catch here. Mostly the people who are fraud
will not want to involve family members or friends into your connection. So they will say, let us not discuss this with the family and friends just yet. Let us meet in person, get to know each other. And once we know each other very well, only then shall we share the news. And you find the idea pretty acceptable, and you said, and you go ahead with it, you accept it. And there is no way your family or your friends are aware that you are already connected with somebody digitally and you're planning to meet that person. They try to gain your trust more. Now they share more about their jobs, what's happening in the office, in their lives, talk about their sisters and brothers, and paint a beautiful picture of a happy family. Or if you are the kind that falls for soft stories, they will tell you about their sad story, where they have been hurt, how they have struggled, and you'll fall hook, line, sinker for such statements. They'll share their deepest secrets with you. So you meet offline once or twice, and suddenly there is a change in attitude. There is mention of money. Now, this mention can be in any way. It can be, I stay abroad, and this is a very favorite NRI uh, uh, ploy that used to be there. I stay abroad, and I'm sending my things over because I want to relocate to India, or I'm sending you some gifts, but they are stuck in traffic at the customs, and you've got to release by paying by going through the process. We have sent you the link, or uh, I have a hospitalization need, or my relative requires immediate hospitalization and my credit card is blocked. So can you please, share some money with me right away? And one of very advanced ploy is, let us buy a house together, our dream house. So you go around choosing a house, and you think in your mind, how am I going to surprise my family and friends when I show them this wonderfully rich, handsome man or woman, and together we have purchased a house all set. They will be so proud of me. And you agree to bear 50% of the loan, and then one day you get the call for the check, the 50% advance share of you from you. So there is a need for cash or bank transfer. And once the money is received or not received, following that, there is absolutely no more connection. The address that you may have got turns out to be wrong. The profile disappears, and the phone numbers that you used to contact that person with, it seems to have been switched off. So this is how the cyber criminal slowly gets into your mind, leads you where he wants you to go, and then makes the killing ask for money. There is also another way cyber criminals attack people on these portals, and that is by asking them, when they become very close to each other, to share private pics. I would love to see you. I'm thinking of you at night. These kind of conversation leading the person who started trusting this partner so much to share pics that may be compromising them and may be used to blackmail them or threaten them with. So pics is another source through which cybercriminals get what they want. Now, you, as a user of these portals, at the dating portal or on social media portals or on a matrimonial website, what are you going to look for? There are little bells that ring and tell you, no, there's something wrong. We are going to look for these bells. Number one, the offer sounds too good to be true. If that is your first instinct, trust it. If it sounds too good to be true online, it is not true. So if somebody who claims to be of either an NRI or settled abroad, good looking, well to do, but wants to come to India and settle down with a homely, grounded person and lead a normal Indian life, there is something wrong. Don't accept that. There can be hundreds and one reason given, which all sound very true, very reasonable. You keep your guard on.
Another thing, which I have already mentioned, wealthy, but wants a simple, grounded partner. Hello, have you seen anybody doing that? Somebody who's very wealthy, but looking on the dating portals to find somebody who's very simple. Can you find that in this manner? I doubt it. Happens only in fairy tale romances. There can be exceptions, but they are those exceptions, not the general uh, event. Check the photographs. Do the profile photo look touched up? Does the age match the photograph, or is it no photograph or a photograph of somebody else? That is quite a giveaway at times. Do a back check on Google with the photograph. You feel this person understands you like no one else. So this shows that the cybercriminal, the hunter, has gained entry into your safe space. They have earned your trust. You trust them, you have confidence in them, you believe what they say. This is the stage where they want you to be in, and you have reached that stage. When you start going to that stage, take a step back and think, am I doing the right thing? Have I already shared this with my friends and family? And if not, why? I've always shared with my parents or with my bestie. Why not this time? What's keeping me? If you're going to get married, the first thing we do is excitedly announce it to all our friends. If you found a partner, if you are dating somebody, you share with your friends that, hey, I'm looking dating with this person and I'm so happy. But now you're not doing so. Analyze why. This person will tend to change topic when you start mentioning meeting the family, him or her meeting your family. If this happens, then you need to be careful. Smoothly lead target to share photos, financial details, family wealth info. So, once the meeting starts offline, first there is a no sharing about, oh, you're just the person that I had dreamt of would be my life partner, or there's the type of person I have always wanted to meet but never found. And all that good and sweet words are over. And then you find that somehow you have started opening up about your finances, what you do, where you live, whether you live alone or share a flat or stay with family, what kind of a job you have, what is your yearly income, is somewhere coming to you from your family. A lot of info you find giving away slowly. Slowly, it's not as if somebody's pushing you to do it. You do it on your own, so you feel there's nothing wrong. I've done it on my own. But why did you? Do you catch hold of anybody on the street and share such financial information? You don't. So why are you doing it now? Think about it. After they know your wealth details, there seems to be a gentle push, to get closer, share information, more information about each other, dream of a rosy future and what will all be there for the future, exchange small gifts. And next is the talk of money. As I've already pointed out, a parcel that is stuck at customs, house loan share, somebody in hospital, credit cards blocked, and money is required immediately. Could you help out? This kind. This has happened to a person I was reading about, and Cora said that this person had the credit cards are blocked because had overdrawn the previous month, and father is hospitalized and immediately needs 20,000. Could you somehow help out? And this girl got suspicious, and but she didn't want to say no either, so she gave him 2,000, which made the man so angry that he stopped connecting with her. And this girl was free after paying just 2,000 rupees. Soon after this process, whether you're paid or not paid, all conversations come to a start. No stop, no more chats, no more calls, no more exchange of dating or venues. It is as if they have disappeared. Because for them it is the end of the story, and they have already started looking for new targets. For those who have shared compromising pictures,
These may be used to blackmail them, sexually abuse them, threaten them, defame them, or even in the case of same-sex couples, out expose them and embarrass them publicly. So these are the ploys used by them to either get money or get into relationships without having any kind of commitment and get out or get what they want. This is how criminals work. Now, there are these two very interesting terms I often talk about that I got from other side, a security vendor called Malware Bytes Lab, catfishing and catfishing. Both are pronounced same. One is spelled with F and the other with PH. What we have been talking about, fraud on FB or any other social media sites, on dating apps and on matrimonial apps, is what is called catfishing, where a person takes on a fictitious profile and then lure people into a romantic trap to get money, gifts, or sexual favors. Catfishing is also something that happens when people lure people in the technical and cybersecurity arena to gain access into their company's security software. So that is not in our arena. Today, we are dealing with catfishing. So if a fraud is trying to connect with you, this is called, this person is trying to catfish. And if somebody falls for it, they have become a victim of catfishing. Now, I'm going to share with you some of these interesting con cases that have happened over the years in India. I'm going to focus only on India. See, these are cases that have been solved dexterously by the police in the country. This is one very interesting case. You can read up about it. This guy, Tanmay Goswami, conned 8 women of 1.25 crores in total. And how did the police discover all the fraud? It is when a girl in Bangalore got a call from the police saying, "Have you made a transfer of so much sum, such and such amount of sum to a guy called Tanmay?" And the girl said, "No, I do not know any Tanmay." But it set her thinking because the sum was very familiar, and a few years back she had made that transfer to another guy whom she knew by another name and who had, after that stopped conversing with her. And she goes to the police, and the police puts together pieces. Others come forward and finds that this Tanmay Goswami used to target a specific kind of women. They will be mostly Bengali women in around their 30s, independent, smart professionals, mostly staying alone, and would play on their emotions to gain their trust and confidence and love, and then swindle them. So this was a famous case that you may read up upon. It will give you a lot of info on how these kind of things happen. I also copied down a few cases from different times across the country. Online fraudsters cheated a software engineer and his sister of more than 1 lakh. This brother and sister, they had registered their sister's name on a very reputed matrimonial site. And with this boy sends across his details and horoscope, and they thought they are dealing with a boy who settled in the US, and the groom was a catch. And so they carried on, and then the groom sends a package to the sister, and the package was supposed to be caught at the customs, and rupees 1 lakh was required for it to be sent on to the girl, and they spent the money. So in small amounts, that person is to take money from them, and then all dealings stopped. This is another case where a man at Deloitte, had befriended a girl whose name, profile, everything was fake, and he fell for it. And because of which, his company computer and computer system, the whole hardware system, was compromised. The police in Cyberabad had nabbed a 4-member gang on charges of cheating a woman on a divorcee matrimonial sites. Look at the smartness of the gang. They always target a particular set of victims.
So these divorcees who are looking for a second relationship may or may not be so uh, smart enough and worldly wise to understand, to pick up the real from the chaff, and they may be hurt, they're already hurting, and they are ready to trust again. So they leverage such emotions to con them. Tinder users have also been warned about new spam bots, which, once you make a friend on Tinder, they will tell you, can you please click on so and so link and get a number, this code, which will then prove that you are a verified Tinder user. Then I'll take the connection forward. And you think, which is a very smart thing to do, because you would also like to know that other person is verified. So click on the link. The link takes you to a place which may or may not have adult websites, and which already registers you for this website automatically for free for a period of time, and after which time your credit card would start deducting, amount will be deducted from your credit card. So these kind of frauds happen in different spheres. So if you are prepared for somebody asking for money and say, oh no, I'm not going to give money to somebody, you may be conversing with that person from your computer in office, and the person sends you a link with a photograph perhaps, and you open and your office's system is compromised. So you have to be very careful as to which link you click on, what kind of photos you share, what kind of personal details you share, because otherwise you stand the chance of being conned. So today, let's find out, how do we keep ourselves safe while we are looking for partners online? Your most important tip, err on the side of caution. Better to be cautious than to take a plunge into the unknown and suffer. When you are dating or planning to join a marriage website, create a new email account. You register on a verified dating or a matrimonial website. Do not, there are many available which are maybe free, which may be having a lot of offers, may tell you that they have members from all over the world, very well to do, prosperous members. Don't be tempted. Look for verified portals and use this new dedicated email account to connect with them. Once you get profiles, naturally most verified and authentic websites keep photographs locked. So once they send you matches, research first, find out whatever you can about this. Do a background check. Are the people available on social media like Facebook, Insta, or other social media pages that you frequent? Do they have a LinkedIn account if they are working? Most probably they should be having a LinkedIn account. Have their names been mentioned? So do a Google name check and find out, have their names come up anywhere, anyway? Or the names, do they match the photographs that you have reached? Without doing this basic check, don't go forward. Now, the person might share with you their ID card at their employment, place of employment, or their bank checkbooks, or you can have a look at their address. All of these details, all of these papers can be fake. So unless you specifically visit the place and see the person working there, or go to the person's house and a number of times and see them staying there, do not believe everything that is said to you. On your side, resist. Better not to give ahead before you are sure. So do not, desist from sharing your address, your job, and your income details. Don't do so. Wait till you are more sure. Don't have to lie because the other person may be a genuine one. It's always better to be truthful. But also, it is wrong to share too much because you do not know yet who the other person is. Is it a genuine profile or is it a fake profile? Whatever you do, keep money out of it. No sharing of UPI wallet,
your Pol's PIN number, your net banking passwords, or your say your ATM pin under any circumstances. Like, oh, I'm busy. Can you just go and withdraw some money from you? This is my pin. I'll change it tomorrow. You may forget to do so. And then what? Money is something that should not be there in the relationship. If you are looking for a true relationship, keep money out of it. For both partners, it applies. Also, supposing somebody sends you a gift and say it is stuck in customs, and then you or at the post office, and then you receive a call supposedly from the post office or customs saying your parcel from so and so, are you the receiver, are you the address? And he said yes, and this is the address. And he said, are you the person whose name is there on the package? He said yes. Well, then you have to come and take this, and you have to fill a fine of so much because import duty on this has not been paid, or because registration or some other tax charges, fines have not been paid. Money is not something that you should easily pay. Unless you just have the product in your hand and check it, don't pay money for it because you do not know, especially online. Don't make a bank transfer, never. If you have to pay, go to that person, go to the post office and check, go to customs yourself and check. No online transfer, or ask somebody else to do so. Do not go by verbal promises. I may be sounding pretty bitter, but initially, when you're doing a digital dating, it is better to, as I said, err on the side of caution. Verbal promises don't work. So you need proof. And it's your money. So if somebody's asking for money because of a crisis, you need solid evidence. It's your money. All, as I told you, compromised pictures of self can be put to many misuses, so better not share them. There's time for many things, but there is one thing you don't do. Don't put your private content, which includes your photographs, your videos, into the digital sphere. You never know how and by who they can be misused. When you're signing up on a site, please check what the site offers, and like added security like profile verification. Profile verification, even if it is a paid service, will ensure that they have taken the trouble to find out that the person is genuine. Opt for Secure Connect if this facility is available, so that your phone number is not revealed to the others even when you are chatting. So they'll be able to chat with you without knowing your phone numbers. Then the decision is up to you when and whether you'd like to share your phone number into a personal level. Yeah, don't ignore your family and friends. You have to keep them informed. Even if the other person does not want it, you may not have to share all details, but say, I have met somebody interesting online. This is the name of that person, and I'm planning to meet that person offline and see where it goes. It may not come to anything. I may not like that person may not like me. So I'm just keeping you informed. As you know, I'm going to go here on such and such date from such and such time, and this is about this person. Don't keep it a secret. You may think about sharing a location. So if you're going to meet somebody for the first time, you can keep your tracking app on, share your location with your family so that they are always aware where you are, and you'll also feel safe because they know where you are and where to find you if the need arises. It has been brought to my notice by different people that these people who try to con people on these such sites do not like their photographs to be taken. They keep saying, no, I'm not very photogenic, or I have this aversion to taking photographs. It's a good thing to have a photograph with that person. Because if there's a lot of aversion, you should be wondering why. Why should a person not want a photograph yet? So think about it. If the person doesn't want a photograph, you cannot impose, but it should set you thinking. If you're suspicious, report to the website and stop taking calls. If you feel harassed, stalked, or threatened in any way, contact your nearest cybercrime cell, the dating website,
And also, at the end of this talk, Janice will be sharing some helpline numbers. Record them and keep them safely, because you never know who might need it someday. Hopefully, never, but it's good to err on the side of caution. About legal recourse, is there a law to help people who have been conned? Yes, the section under Section 66D of the IT Act 2008, there are punishment for offenses like that. And so also under Actions Technology Act, the same IT Act, Section 415, 416, 417, 419, and 420, they deal with cheating and cheating by impersonation of a person. So therefore, you may have legal aid if necessary. If you do not hesitate, you know what you need to be? You need to be strong. If you have been conned, accept it. You have been conned. If somebody is misusing a photograph, it's to be stopped. You cannot let that happen, and you cannot let it go viral. You need to inform your family, friends, seek legal recourse. There are many cyber lawyers who would be too glad to help you find solutions. Take their help. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so very much. In fact, I myself could, learn a few new things here today. तो एक क्वेश्चन में लिखा आया था कि क्योंकि इंग्लिश में हो गया, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी. हाँ, बताइए, हिंदी में बताऊंगी. बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी इंग्लिश हम हर भाषा में एकदम परफेक्टली आपको समझा पाएंगे. तो जस्ट टू क्विकली गिव यू अ रिकैप, मैम का यही मेन मुद्दा यही था कि आपको सोचना है. ठीक है, प्यार करना गलत नहीं है, वेबसाइट पे जाना गलत नहीं है, आप बात कर रहे हैं, फोटो भी भेज रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन किसके साथ किस तरीके से आपने सोचना है, आपने क्रिटिकली थिंक करना है. देखिए फ्रेंड्स, इंटरनेट ने हमारी लाइव्स में बहुत वैल्यू दी है, बहुत हमारी लाइव्स को इजी बनाया है, बहुत हमने तरक्की करी है थैंक्स टू द इंटरनेट. लेकिन इन्हीं सब रिसोर्सेज को यूज करके क्रिमिनल भी आपको पकड़ेंगे, आपको उल्लू बनाने की कोशिश करेंगे. एंड द बेस्ट वे टू डू इज टू इंटरेक्ट विद यू रोमांटिकली. बहलाएंगे, फुसलाएंगे, पैसे लेके भाग जाएंगे, और ये कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है. तो जस्ट टू ऐड एक दो चीजें मैं ऐड करना चाहूंगी, फिर हम क्विकली क्वेश्चंस ले लेंगे फ्रेंड्स. सबसे पहले तो ये मत सोचिएगा कि ये तो ये देखो न्यूज में पढ़ते हैं, ये दूसरों का होता है, हमारे साथ नहीं होता. ऐसा नहीं है. आप सब बहुत स्मार्ट लोग हैं, आप सब बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, फिर भी फ्रेंड्स क्रिमिनल्स सैडली हमसे 10 कदम आगे रहता है. इसीलिए आप न्यूज में क्राइम के बारे में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं क्रिमिनल हमसे स्मार्ट है. तो कभी भी ये ना सोचे कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता है. हमेशा सतर्क रहना है. नो मैटर व्हाट हैपेंस, थिंक लॉजिकली. एंड एज मैम वेरी करेक्टली सेड, ये मैं हर सेशन में 50 बार रिपीट करती हूँ, डू नॉट बिलीव एवरीथिंग दैट यू सी ऑनलाइन. ठीक, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, फ्री में सिर्फ माता पिता का प्यार मिलता है और कुछ नहीं मिलता है. तो फ्री के चक्कर में आप लिंक्स पर क्लिक कर रहे हैं या प्रोफाइल्स को बिलीव कर रहे हैं. बिल्कुल दोस्ती करें, यारी करें, सब करें, बट सोच समझ कर. बी वेरी केयरफुल, लुक आउट फॉर दीज रेड फ्लैग्स. और फ्रेंड्स, कभी भी वर्स्ट केस सिनेरियो अगर दिक्कत होती है, प्लीज आप खुद को ब्लेम ना करें. स्पेशली मैम ने बताया कि फोटो शेयर करी जाती हैं, एकदम प्यार की चरम सीमा में 7 जन्मों के वादे हो गए हैं, वी एंड अप शेयरिंग प्राइवेट फोटोज. अगेन, प्राइवेट फोटो शेयर करना सही है गलत है, आई एम नॉट अ सेंट, सो आई कैन नॉट टेल यू व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. लेकिन मैम भी इस डोमेन में काम करते हैं, मैं भी करती हूँ, तो एटलीस्ट फ्रॉम अ लीगल पर्सपेक्टिव फ्रेंड्स, आपने कोई गलती नहीं करी है, शायद गलत इंसान से दोस्ती करी आपने, लेकिन खुद को प्लीज ब्लेम ना करें. और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके जान पहचान में कोई ऐसी सिचुएशन में फंसे, तो आप भी उन्हें ब्लेम ना करें. एज इट इज, द विक्टिम इज ब्लेमिंग देमसेल्व्स. विक्टिम का जो स्टेट ऑफ माइंड है फ्रेंड्स, वी आर लकी कि हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. वी हैव गॉटन सो मेनी केसेस, आई एम श्योर मैम भी अग्री करेंगे, इतने सारे केस हमें आए हैं, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, स्पेशली वुमेन, दे कॉन्टेम्पलेट टेकिंग देयर ओन लाइव्स. फोन आते हैं, रोते हैं, मैम लाइफ खत्म हो गई है, ना पुलिस के पास जा सकते हैं, ना घर वालों को बता सकते हैं, फोटो चली गई है, मैम इज्जत खत्म हो गई है, मैं खुदकुशी कर रही हूँ. तो ये जो एक नौबत है, ये किसी, नोबडी शुड बी इन दिस सिचुएशन. तो हमें अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबल बनना है, और दूसरों की तरफ भी जितना हो सके हम कोशिश करेंगे दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड वी आर रिस्पेक्टफुल.
तो कोई अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आती है फ्रेंड्स, जैसा मैम ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया, कंप्लेंट आप फाइल कर सकते हैं। अब देखिए मैम ने सेक्शन बताया, शायद आपको सेक्शंस ना याद हो, हमारा तो काम है तो हम तो एकदम सब याद करके बैठे हैं, बट आपको केवल इतना याद रखना है कि अगर कोई आपको अनकंफर्टेबल फील कराए, आप एक्शन ले सकते हैं। सेक्शन कौन सा लगाना है वो आप वकीलों पे छोड़ दीजिए, बहुत बढ़िया वकील है हमारे इंडिया में। मैम इज वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल वुमेन आई हैव कम अक्रॉस। मैम हेल्प करेंगे, हमारी टीम हेल्प करेगी। तो आपने सिर्फ सही लोगों तक पहुंचना है। नाउ आई विल बी शेयरिंग अ फ्यू लिंक्स इन द चैट बॉक्स फ्रेंड्स, एंड विल बी वेरी क्विकली टेकिंग योर क्वेश्चंस एज वेल। तो एक तो बेस्ट सोल्यूशन यही रहता है फ्रेंड्स कि आप पुलिस के पास जाएं, क्योंकि जब तक एफआईआर फाइल नहीं होती है फ्रेंड्स, ये हम एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इंसान जो क्रिमिनल है उन्हें एप्रीहेंड करना, और केस बन ही नहीं पाएगा। तो कोशिश करें कि जितना हो सके आप पुलिस के पास जाएं, एफआईआर अपनी दर्ज कराएं। एफआईआर वर्स्ट केस सिनेरियो फ्रेंड्स, नाउ वी वर्क विद द पुलिस, दिस कैंपेन इज विद द दिल्ली पुलिस, दे हैव बीन वेरी एक्टिव। इनफैक्ट आप किसी भी स्टेट में हैं, आप एक्शन ले सकते हैं बाय गोइंग टू द पुलिस। वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर कंप्लेंट नहीं दर्ज होती है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। देयर इज समबडी कॉल्ड द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी के पास जाए, उनकी डिटेल्स निकालें, एसपी को बताएं सर मैम हम इस थाने गए थे, मदद नहीं हुई, एसपी बाय लॉ विल हेल्प यू। अब मान लेते हैं एसपी के पास आप गए फिर भी मदद नहीं होती है, तो भी घबराना नहीं है। देयर इज समबडी कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अच्छा, हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होता है, ठीक है, दिल्ली में कई डिस्ट्रिक्ट है, कई सारे कोर्ट है, हर स्टेट का हाई कोर्ट होता है और पूरी कंट्री का सुप्रीम कोर्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज बैठते हैं, वी कॉल देम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आप उनकी डिटेल्स निकालें, इंटरनेट आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगी, आप उनके पास जाएं, सर मैम हम थाने में गए मदद नहीं हुई, एसपी के पास गए मदद नहीं हुई, हम आपके पास आ रहे हैं। तो अगर कभी भी ऐसा कभी होगा नहीं, बट मान लो 1% भी थाने में मदद नहीं होती है, घबराना नहीं है, आपको हमने 2 और तरीके बता दिए। आप जा सकते हैं एसपी के पास, आप जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। नाउ इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल गोइंग टू द पुलिस फॉर वट एवर रीजन, डर लग रहा है, घबरा रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, हमने चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। एक तो जो साइबर दोस्त है, ये एक इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैंडल करता है। आप सिंपली ट्वीट कर दें, पर्सनल मैटर है, पब्लिकली नहीं आप पोस्ट करना चाहते हैं, आप इनको डायरेक्ट मैसेज करें, इनको बता देखिए ऐसी सी दिक्कत हो रही है, दे मे नॉट बी एबल टू फाइल अ कंप्लेंट बट एटलीस्ट दे विल टेल यू व्हाट टू डू, आपको नेक्स्ट स्टेप बता देंगे, आपको सही लोगों से कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इट इज हाई टाइम दैट वुमेन स्टार्ट टेकिंग एक्शन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिमिनल में इतनी हिम्मत क्यों आती है, अरे औरत है क्या कर लेगी, औरतें, अब आई थिंक औरतों को करके अब दिखाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हवा में कंप्लेंट हम फाइल करें, बट जेन्युइनली अगर कंप्लेंट है आपकी, कोई दिक्कत हो रही है। अच्छा, हम लोग ना बचपन में हमने स्कूल में बात करी है अबाउट गुड टच एंड बैड टच। हाँ, आई वुड प्रेफर कॉलिंग इट सेफ एंड अनसेफ टच। जब कोई आपको गलत तरीके से टच करता है, आपको पता कैसे चलता है? क्या वो बताते कि गलत तरीके से टच करने वाला हो? नहीं, आपको अंदर से घिन आती है, यू फील डिसगस्टफुल, आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। सिमिलरली इंटरनेट पर कोई भी किसी भी तरीके से आपको अनकंफर्टेबल फील कराए, ये कौन सा लॉ लगेगा, कौन सी कंप्लेंट फाइल होगी, आपने कोई दिमाग नहीं लगाना है। आपको बुरा फील हो रहा है, आप अनकंफर्टेबल हैं, आपको लग रहा है ऐसी हरकत किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, कंप्लेंट फाइल करें। तो साइबर दोस्त का हैंडल मैंने शेयर कर दिया है, आप चैट बॉक्स से ही डायरेक्टली आप इनके ट्विटर हैंडल को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारी साइबर पीस फाउंडेशन का भी एक हेल्पलाइन है। अगेन फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर, वी आर नॉट लॉ एनफोर्समेंट, तो हम अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप बस हमें बता दें कि देखो ऐसी दिक्कत हो रही है, क्या करें। मैम ने बहुत बढ़िया टिप्स दिए हैं, फोटो सोच समझ के शेयर करें, सामने वाले की फोटो को सोच समझ के बिलीव करें, जो इन्फॉर्मेशन क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या पोस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सिंपल टिप्स भी अगर आप चाहते हैं, सिंपली हमें मैसेज करें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, वी विल हेल्प यू आउट। अगेन, पुलिस के पास नहीं जाना है, साइबर क्राइम पोर्टल बहुत ही बढ़िया पोर्टल, स्पेशली फॉर विमेन एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, विमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज, उस सेक्शन पर जाएं, कंप्लेंट फाइल करें। इसके अलावा एनसीडब्ल्यू, राष्ट्र महिला आयोग, ये बना ही महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए है। तो कोई दिक्कत आती है, अच्छा फ्रेंड्स, अब जरूरी नहीं है कि चीजें ऑनलाइन हो रही हों, कुछ चीजें शुरू ऑनलाइन होती हैं, खत्म ऑफलाइन होती हैं। ऑनलाइन किसी ने बदतमीजी करी, कुछ वल्गर कमेंट कर दिया, 2 दिन बाद घर के बाहर आके धमका रहे, फ्लैश कर रहे, कुछ भी हो सकता है। थिंग्स में स्टार्ट ऑनलाइन एंड एंड ऑफलाइन, और थिंग्स में स्टार्ट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तभी भी आपने घबराना नहीं है, आपने कंप्लेंट फाइल करनी है। एंड फ्रेंड्स, वन वेरी इंपॉर्टेंट टिप, कुछ भी हो जाए एविडेंस कलेक्ट जरूर करें।
एक बहुत बड़ी भूल जो कई बार मैंने भी करी थी बिफोर आई गॉट इनटू दिस फील्ड, होता क्या था ना, किसी इंसान ने गंदी फोटो भेज दी, बॉडी पार्ट की फोटो भेजी, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, इमीडिएटली फटाक से उसको डिलीट कर दो, मुझे देखना ही नहीं है। ये एक्चुअली फ्रेंड्स एक गलती है, क्योंकि आप जब एविडेंस डिलीट करेंगे केस बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पुलिस डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन जितना ज्यादा आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, अ स्ट्रॉन्गर केस कैन बी बिल्ट। सो नो मैटर व्हाट हैपेंस, डू नॉट डिलीट एनीथिंग। थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी है, इमीडिएटली स्क्रीनशॉट खींचें। कोई मैसेज आपको भेज रहा है, प्रोफाइल खोले, प्रोफाइल के यूआरएल को कॉपी करे। क्रिमिनल बड़े शातिर है, प्लीज रिमेंबर दिस, बड़े बड़े तेज क्रिमिनल है, बदतमीजी करेंगे, अकाउंट डिलीट कर लेंगे, कर लो जो करना है, करके दिखाएंगे ना आपको, तरीका हम बता रहे हैं। आप प्रोफाइल के लिंक को कॉपी करके रखें, सो दैट इवन इफ अ क्रिमिनल डिलीट्स देयर प्रोफाइल, उनके जो प्रोफाइल का लिंक है उसे यूज करके पुलिस पता लगा सकती है ये फेलो कौन है, कहाँ है, कैसे। तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे फ्रेंड्स कि आप खुद तो सेफ रहें ही, और इस इंफॉर्मेशन को प्लीज मैक्सिमम लोगों तक आप पहुंचाएं। ऑल्सो समबडी सेड ये इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर होना चाहिए, सो मैम आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज टॉक अ लिटिल बिट अबाउट मिशन साइबर सेफ्टी एंड द काइंड ऑफ रिसोर्सेज that the participants can go through. Also friends, CyberPeace Foundation की सारी लिंक्स में चैट बॉक्स में डाल ही रही हूँ, बहुत सारी वीडियोस, बहुत चीजें, आप उसको सेशन के बाद विजिट कर सकते हैं। मैम या थैंक यू। ऐसा है कि मेरा जो मिशन साइबर सेफ्टी है, ये बच्चों का, पेरेंट्स का, सबके लिए हर एक टॉपिक पे डिफरेंट डिफरेंट जो साइबर क्राइम्स एंड साइबर थ्रेट्स है दुनिया में, उस पे किया है। तो अभी जैसे ये मेरे साथ एक किसी ने कांटेक्ट किया ट्विटर पे कि उनको किसी ने धोखा दिया ऑनलाइन, वो बहुत बिलीव करने चुकी थी, और फिर उसने उसके साथ पूरा कनेक्शन काट दिया। करने के बाद भी उसने देखा उस वेबसाइट पर, उस मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर बंदे ने दूसरा नाम लेके, दूसरा फोटो लेके उसने डाला है, मगर वो पहचान गई कि जितना एज, हॉबीज, प्रोफेशन जो लिखा है वो एग्जैक्टली सेम है। उसने वेबसाइट को भी कंप्लेन किया, मगर वेबसाइट ने कहा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। तो उसने कोई पुलिस ऑफिस के पास गई थी, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के पास, तो वहां भी नहीं हुआ। तो मैंने भी उसे एडवाइस किया कि cybercrime.gov.in या एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, में रजिस्टर करे अपना कंप्लेन, और इसको आगे ले जाए। दब के नहीं रहना है, ये हमेशा समझना है, स्पेशली लड़कियों को, कि डरने की बात नहीं है। आप अपनी जिंदगी इस छोटी बात के लिए मत लीजिए। गलती नहीं है, गलत आदमी से आपका पारा पड़ा था, वो गलत आदमी को आपको सिखाना है सबक। आप अपने पर मत लीजिए, गलती आपकी कहीं भी नहीं है। अगर आपने पैसा भेज दिया तो सोचिए पैसा डूब गया किसी काम में, मगर वो आदमी आदमी से तो आप बच गए, वैसे आदमी से आपको छुटकारा मिल गया। या किसी को आपने गलती से एक फोटोग्राफ भेज दिया, या अपना कोई डिटेल शेयर किया जो जिसका वो गलत ये कर सकता है, तो जैसे कि जानिस ने बताया, आप किसी अच्छे साइबर लॉयर का सलाह कीजिए, उनका एडवाइस लीजिए। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप स्नैपचैट यूज कर रही है तो वहां फोटोग्राफ उड़ते रहते हैं। सो जानिस ने जैसे कहा, स्क्रीनशॉट लेके इमीडिएटली रखिए। मैंने पहले भी कहा था, एविडेंस इज रिक्वायर्ड। बिना प्रूफ के कोई बात, सबूत आपको जरूरत है, किसी ने आपको क्या कहा। और जो जानिस जो पॉइंट के, प्रोफाइल लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पुलिस का साइबर क्राइम डिपार्टमेंट खोज लेंगे कि किस कंप्यूटर से भी आया होगा, आईपी एड्रेस भी निकाल सकते हैं धीरे लोग। तो इसके लिए आपको भी थोड़ा प्रोएक्टिव रहना है। आपको भी जानना है कि मुझे सहना नहीं है, मैं इसके अगेंस्ट में लड़ूंगी, और इसके लिए आपको शर्माने की या आपको बेइज्जत होने की कोई बात नहीं है। और आपको अपने साथ रखना है उनको जो कि हमेशा आपके साथ हो, आपके पेरेंट्स, भाई बहन, बहुत ही क्लोज दोस्त, जो कि हमेशा आपके साथ रहेंगे। पेरेंट्स गुस्सा हो सकते होंगे, आप गलती करने से बचपन में भी पेरेंट्स गुस्सा होते थे, डांट दिया करते थे, मगर उसके बाद वो आप ही की मदद करेंगे, आपके भला के लिए। सो आप फॉलो कीजिए मुझे ट्विटर पे, वहां मैं रेगुलरली एवरीडे सिंपल इंग्लिश में लिखते रहती हूँ साइबर सेफ्टी टिप्स हर एक प्रॉब्लम के ऊपर। और साइबर पीस कॉर्प्स, दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम सेल, बहुत बहुत वंडरफुल सेल्स है ऑल ओवर इंडिया। सारे साइबर क्राइम सेल्स और डिफरेंट पुलिस और रीजनल पुलिस, उन लोग ने बहुत बहुत अच्छा अच्छा सब ट्वीट शेयर करना शुरू किए हैं, उसका फायदा लीजिए एंड स्टे सेफ।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच। तो फ्रेंड्स, आपको मैम ने बता दिया है कि मैम का जो हैंडल है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा सोशल मीडिया हैंडल हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, साइबर पीस टीवी का लिंक हम शेयर कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जस्ट टू क्विकली रिपीट व्हाट बोथ ऑफ अस सेड, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। दिक्कत होती True. है आप सही टाइम पे, अच्छा फ्रेंड्स, ये टाइम, सही टाइम के अंदर कंप्लेंट करना भी इंपॉर्टेंट है। हुआ कुछ आज, आप अगर 1 महीने बाद जाएंगे तो कंप्लेंट तो फाइल हो सकती है, बट ज्यादा स्विफ्टली एक्शन लिया जाएगा आप अगर इमीडिएटली जाए। सो प्लीज True. रीच आउट। सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने लिंक में, हमने चैट बॉक्स में शेयर कर दिए हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, अभी 2 और लिंक्स मैंने शेयर किए हैं चैट बॉक्स में। एक फेसबुक का है, एक इंस्टाग्राम का है। जैसे मैम ने बताया, बिना परमिशन के फोटो शेयर कर दी या धमका दिया, ऐसा करो वरना फोटो लीक कर देंगे, पैसे दो, रिलेशनशिप में वापस आ जाओ वरना तुम्हारी फोटो लीक कर देंगे। ये केस होता है फ्रेंड्स रिवेंज पोर्नोग्राफी का। क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं, आप डेफिनेटली मैम को रीच आउट कर सकते हैं थ्रू हर ट्विटर हैंडल, एंड आई एम श्योर शी विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। मैम ने ऑलरेडी भी रिसोर्सेज क्रिएट करे होंगे, हमारे चैनल पे भी आपको काफी मटेरियल मिल जाएगा। अगर ऐसा आपके साथ होता है, कोई धमका रहा है, डरा रहा है, फोटो, कोई अगर डराता भी है ना, ऐसा करो वरना ये कर देंगे, दैट इज ऑल्सो पनिशेबल ऑफेंस, क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहते हैं इसे। और मान लो Yeah. कोई अगर फोटो वीडियो लीक कर दे, तो केस बनता ही है बिल्कुल रिवेंज पोर्नोग्राफी का। लेकिन जैसा हमने बताया, कई बार लोग डरते हैं, केस वेस नहीं करना, जेल नहीं भेजना है, बस फोटो हटवा दो। तो ये भी घर बैठे बैठे आप खुद कर सकते हैं। एक सिंपल फॉर्म आपने भरना है, दोनों फॉर्म हमने चैट बॉक्स में डाल दिए हैं। तो कोई भी वेबसाइट, इवन इफ इट्स एन अडल्ट वेबसाइट, मान लो अगर पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर भी आपकी फोटो वीडियो चली जाती है, हर प्लेटफॉर्म पर एक कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ये कीवर्ड्स प्लीज याद रखिएगा, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का फॉर्म रहता है। सिंपली सर्च कर ले उस प्लेटफॉर्म पर, इस फॉर्म को मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम का डाल दिया है, फटाक से 30 सेकंड में आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा। 24 घंटों के अंदर गारंटीड है द फोटो और द वीडियो विल बी टेकन डाउन। और अगर प्राइवेट फोटो या वीडियो है, कोई सेक्सुअल फोटो है, आपने जो कॉन्फिडेंस में भेजा है, तो विद इन मिनट्स फ्रेंड्स, ये प्लेटफॉर्म्स बहुत प्रोएक्टिव होते हैं, विद इन मिनट्स, खास करके अगर रिवेंज पोर्नोग्राफी का केस है या रेप वीडियो चला गया है, विद इन सेकेंड्स दे विल रिमूव इट। तो आप कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम आप पुलिस के पास जाए, कंप्लेंट फाइल करें, बट नहीं कंफर्ट अगर बनता है तो हम लोग हमेशा है आपकी मदद करने के लिए। यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस। वेरी क्विकली 2-3 क्वेश्चंस आए थे, वो हम आई थिंक ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं। एक राहुल जी का क्वेश्चन है, हेलो मैम, हाउ कैन आई मेक माय करियर इन साइबर सिक्योरिटी फील्ड? मैम, if you could just give a few tips on this. Yeah, to make a career in cybersecurity field, you don't always need to be an IT expert. You need to be somebody जिनका maths, logic बहुत strong है. Logically, you have to solve problems. अगर problems solving skills अच्छा है, तो आप cyber security के बहुत सारे courses होते हैं online, वो कर सकते हैं. अगर आप engineering कर लिए हैं, ये diploma in engineering है, computer engineering वो भी कर लिए हैं, उसके साथ साथ online ये सब आप सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करते रहेंगे, जैसे व्हाइट हैट, हैकिंग वाला, तो आपका वो बनते जाएगा, साइबर सिक्योरिटी पोर्टफोलियो बनते जाएगा। Thank you, ma'am. Also, I did a course in cyber law, which is why, by God's grace, I was able to go to a decent college and get this knowledge. So it has definitely helped me. लेकिन मान लो अगर आपने ग्रेजुएशन, जैसा मैम ने कहा, ऐसा कुछ नहीं भी किया है तो भी इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सारी बात इंटरेस्ट की होती है। अगर आपको लगता है इस डोमेन में आपने काम करना है, मैम और हमने तो प्रोफेशनली इसको लिया है, आप एज अ साइड में भी आप इसे ले सकते हैं। इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंगली फ्रेंड्स, वी हैव अ वॉलंटियर ग्रुप कॉल्ड द साइबर पीस कोर, अगेन लिंक हमने चैट बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप एज अ वॉलंटियर भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, जस्ट रजिस्टर विद अस यूजिंग दिस लिंक एंड वी विल मोर देन हैप्पी टू हैव पीपल लाइक यू ऑन आवर टीम। So I think that's all. Any more questions if anybody has, you can quickly post them. आई थिंक करियर वाला तो हमने जवाब दे दिया है। आप अगर स्कूल में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने ग्रेजुएशन में प्लान करें। देखिए अभी आपके पास टाइम है, आराम से पहले बोर्ड पेपर अपना दीजिए, क्लियर कीजिए, फिर यू कैन कीप रिसर्चिंग इन द मीन टाइम। मैम का बैकग्राउंड आप चेक करें, मैम कैसे इसमें घुसे इस फील्ड में, आप साइबर पीस फाउंडेशन के टीम मेंबर्स को देखें, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। प्रोफेशनली नहीं भी करना है तो साइबर पीस कोर है। इफ यू आर स्टिल इन स्कूल, वी कैन सेट अप अ साइबर पीस क्लब एट योर स्कूल। तरीके बहुत सारे हैं, बस अंदर एक विश होना चाहिए टू डू करने के लिए। एग्जैक्टली right. So I think that's all the questions we had. Friends, agar aur aapko questions hai, you can reach out to Mission Cyber Safety, you can reach out to us. We're always here, more than happy to help you. So once again, a big thank you to Anandita ma'am from your busy schedule, took out the time, and I think this is one of the best sessions that we've had as part of this campaign. And thank you ma'am for telling us in such a short amount of time, in very crisp, what are some of the important things to keep in mind, and also the modus operandi used by the criminal.
क्रिमिनल के दिमाग में घुस के उन्हीं के पैतरों को आई थिंक यहाँ पर खोल के बताना is one of the best ways to decode these crimes and stay safe. So once again, thank you very much, ma'am. I hope we can do more sessions with you. And also big thank you to everybody at the Delhi Police team and CyberPeace Foundation for conducting this wonderful session. And of course, all our wonderful participants. आप नहीं होते तो क्या ही session होता. So I Absolutely. hope you all can join us for the other sessions as well. Next session is scheduled for 25th, friends. And that's going to be specifically about cybercrime and redressal. तो आज जो हमने चीजें बताई है, we'll be continuing the conversation. सारी details आपको social media handles पर मिल जाएंगी. So I hope I'll be able to see you all then. Till then, stay aware, stay safe. Thank you. Thank you.